हम लोग बात कर रहे हैं ग्लोबल असेट एलोकेशन की एंड इमर्जिंग मार्केट में ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द रिटर्न्स हैव कम फ्रॉम ताइवान एंड कोरिया. Yes. इक्विटी में अर्निंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट Yeah. एंड फॉर एग्जांपल सैमसंग दिस ईयर उनका अर्निंग 600% से इंक्रीज हुआ है. Wow. Okay. नाउ यू टेल मी, इज दिस अ नॉर्मल सिनेरियो? This is super cycle in AI. Now when we talk to companies, this is interesting. Even we ask them that आपका just in time तो ठीक है, आप efficient है, supply chain कहाँ से ले रहे हैं, इससे माल लेंगे. अभी आप just in case के लिए तैयार हैं क्या? कि if this happens, Right. then what will you do? Then what will you do? See, there if a sector is going through a downturn, we know that I do not have to look at for 3-5 years. I do not have to time it the earning for next 3-5. So sometimes I buy sectoral funds also. Okay. But by and large, it is more towards mid and small Okay. is where I am placed. 2020 में जब कोविड हुआ था, आई थिंक ऑल ऑफ अस आर वेरी वरीड अबाउट आवर इन्वेस्टमेंट्स क्योंकि तब मार्केट में बहुत ज़्यादा फियर था. बट ऑफ कोर्स मार्केट रिकवरी हैपेंड. तो आज के हमारे एपिसोड में हम ये सीखते हैं कि हम पिछले 10 साल में जो भी इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ है उससे हमने क्या सीखा है एज एन इन्वेस्टर. हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नम्रता अरोरा है. वेलकम बैक टू म्यूचुअल फंड की बात. म्यूचुअल फंड की बात में हम ग्लोबल और इंडियन इकोनॉमिक कंडीशंस, कमोडिटी, स्टॉक मार्केट्स, म्यूचुअल फंड्स, इन सबके बारे में बात करते हैं. और आज हमारे साथ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम वी हैव मिस्टर अजय खंडेलवाल. मिस्टर अजय खंडेलवाल मोतीलाल ओसवाल असेट मैनेजमेंट में फंड मैनेजर के रूप में काम करते हैं. इनको 18 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है इन इक्विटी मार्केट्स. मोतीलाल ओसवाल ज्वाइन करने से पहले वो कैनरा रोबेको और भारतीय एक्सा इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स में 6 साल तक काम कर चुके हैं एज अ फंड मैनेजर और उन्होंने तापमी से MBA भी किया है. Hello friends, welcome back to Mutual Fund की बात. Thank you so much for joining us again this week. As all of you know, हम ट्राई करते हैं कि हम जितने भी फंड मैनेजर्स हैं उनको अपने एपिसोड में लाएं एंड वी ट्राई टू गेट देयर पर्सपेक्टिव ऑन डिफरेंट फंड्स, डिफरेंट थिंग्स हैपनिंग अराउंड अस, जिससे कि एज एन इन्वेस्टर आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले कि आप जिस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं क्या वो सही है आपके लिए या नहीं. एंड टुडे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम वी हैव विद अस मिस्टर अजय खंडेलवाल. He's a fund manager at Motilal Oswal. So Ajay, thank you so much for being here and coming to our show. Always a pleasure. So Ajay is here and Ajay manages the mid cap fund, the large and mid cap fund. He manages the small cap fund. He also manages the flexi cap fund. तो अगर आप में से आप लोगों ने इनमें से किसी भी फंड में इन्वेस्ट किया है या आपको you want to understand about what has happened in the last 10 years and हम पिछले 10 साल से क्या कि जो जो भी हमारे आसपास हुआ है उससे हम क्या सीख सकते हैं, वो आज हम अजय जी के साथ डिस्कस करेंगे. सो कीप वॉचिंग. आई हैव अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस फॉर मिस्टर अजय. सो Thank you. Ajay, let's get started with a very simple question. Just recently मोदी जी ने अनाउंस किया कि सारे देशवासियों को गोल्ड नहीं खरीदना चाहिए या फिर we should work from home, we should try using less fuel and so on. तो आप हमें ये बताइए कि इस कॉन्टेक्स्ट में एज एन इन्वेस्टर अगर मैं अपने पोर्टफोलियो को देख रही हूँ, राइट, एंड अगर हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं कि गोल्ड मत खरीदिए, डू यू थिंक इसका इम्पैक्ट गोल्ड ETFs पे होने वाला है इन द कमिंग फ्यू डेज? अगर दिस इज लाइक 2013 में भी सेम सिचुएशन हुआ था जबकि इंडिया में गोल्ड का इंपोर्ट काफ़ी बढ़ गया था. वी ऑलमोस्ट डिड मोर देन 1000 करोड़ 1000 टन ऑफ गोल्ड इंपोर्ट. ओके. एंड उस टाइम पर हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट ऑलमोस्ट 7% चला गया था. ओके. एंड करेंसी ऑलमोस्ट 20% से डिप्रिशिएट हुआ था इन दैट टाइम फ्रेम. सो सी, बिकॉज हमारा डिपेंडेंसी है ऑन इम्पोर्ट्स ऑफ ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक्स, एंड इसका प्रेशर करेंसी पर भी है. सो इवेंचुअली क्या होगा कि ये विद ऑयल प्राइस इंक्रीजिंग वो इन्फ्लेशन में भी रिफ्लेक्ट होगा. सो आई थिंक इकोनॉमिकली इट मेक सेंस कि हम डिपेंडेंसी अपना इंपोर्ट पर कम करें, स्पेशली जो चीज़ें डेली में इम्पैक्ट करती हैं, बिकॉज ऑयल का इम्पैक्ट लॉजिस्टिक्स में भी होगा, पैकेजिंग में भी होगा, कंपनीज के मार्जिन्स में भी आएगा. सिमिलरली जो बैलेंस शीट जहाँ कंपनीज ने डेट लेके बिजनेस करते हैं वहाँ पे बिकॉज इंक्रीज इन इन्फ्लेशन के कारण इंटरेस्ट रेट भी ऊपर होगा, तो वो इम्पैक्ट उसका रियल इकोनॉमी में भी फील होगा. ओके. हमने तभी देखा था, जैसे अभी 8-9% का इंक्रीज़ किया है इन द रेट.
सो उसका बॉल पार्क 3 to 5% इम्पैक्ट आता है. Okay. एंड आइडियली इस केस में बिकॉज गोल्ड पे इम्पैक्ट आएगा तो एक टाइम के लिए तो इन्वेस्टमेंट का आपका इम्प्रूवमेंट आ गया है बिकॉज प्राइस इंक्रीज हुआ है. बट उसके बाद हमने देखा है कि जनरली ग्रोथ गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है और वो सेविंग्स इक्विटी की तरफ जाने लगता है. Right. सो आई थिंक बिकॉज लास्ट 2 साल में एज एन असेट क्लास गोल्ड ने काफ़ी अच्छा किया है. Mhm. आई वुड से सुपर साइकिल चल रहा है इन कमोडिटी स्पेशली इन प्रेशियस मेटल्स. Right. बट आप अगर 2023 तक का देखें, लास्ट 2 साल हटा दीजिए, हम्म. आप 5 ईयर 10 ईयर 15 ईयर 20 ईयर देखिए इन INR और USD, index has done better than gold. Yeah. So that way I think it is very important, both from fundamental perspective plus savings ideally should move to equity is Okay. what we feel. Okay, okay. So, just yesterday I was talking to a few investors and they asked me कि मैम आप हमें ये बताइए क्या हमें अभी गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए. Forget what is happening around us. Just from an investment perspective, क्या अभी गोल्ड रेट और बढ़ेगा या कम होगा? तो what is your take on this, Ajay? So see, because जो geopolitical situation है and we have never seen across the world central banks buying gold like this. Right. Incremental gold purchase का almost 1/4 is now bought by central banks. So अगर ये continue रहा trend, तो gold, especially with all these uncertainties, as a risk, that Risk asset management class tool, yeah. will do well. Okay. But as I said, कि ये see these cycles, especially after they play out, Yeah. it becomes very difficult to say कि now ये अगले 3 साल भी continue करेगा. Yeah. So from that prudent perspective, I think investors should be more disciplined. Yeah. And especially considering last 2 साल में equity markets have not done so well, जबकि earnings improve हुए हैं. Right. So I think as advisors, we need to have right asset allocation. Okay. Yeah. Okay. So, since we're talking about asset allocation, let me ask you my next question. हमने ये देखा है and we've seen कि जब भी कोई भी क्राइसिस होता है likes of COVID in 2020, 2008 मुझे लग रहा है बहुत पुराना हो गया है. Of course, that was probably the biggest recession we've seen in our lifetime. But अगर हम उसकी बात ना करें, let's talk about COVID. तब of course, globally everything was impacted and we saw a lot of global supply chain shocks. अभी हम वो same challenge देख रहे हैं when it comes to the US-Iran war, right? With so much dependency on global supply chain, do you think it makes sense कि as investors हमें global diversification करना चाहिए अपने portfolio में? कि अगर मैं asset allocation कर रही हूँ, मेरे portfolio में कुछ global diversification भी होना चाहिए, जिससे कि एक वो balance create हो जाता है. So again, let's थोड़ा सा look at the overall Okay. scenario. हम लोग बात कर रहे हैं ग्लोबल असेट एलोकेशन की एंड इमर्जिंग मार्केट में ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द रिटर्न्स हैव कम फ्रॉम ताइवान एंड कोरिया. Yes. नाउ सी इक्विटी में अर्निंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. Yeah. एंड फॉर एग्जांपल सैमसंग दिस ईयर उनका अर्निंग 600% से इंक्रीज हुआ है. Wow. Okay. Now you tell me, is this a normal scenario? This No. is super cycle in AI, which is leading to this kind of returns and profits for certain businesses. Right. Now, as investors, when we think of 3, 5, 7 years, किसी भी asset class में हमने इतनी सारी commodity cycles देखे हैं. We have seen जब supply constrained होता है and suddenly demand spurt आता है. हाँ. Supply एक साथ रैंप अप नहीं होता है. सो वी हैव सीन प्राइसेस मूविंग 3x 5x इवन इन इंडियन मार्केट्स. राइट. हमने कमोडिटीज में देखा है, हमने स्पेशलिटी केमिकल में देखा है, शिपिंग रेट्स फॉर एग्जांपल वी हैव सीन, पर उसके बाद दे नॉर्मलाइज. सो नेक्स्ट ईयर मे बी पीक अर्निंग हो जाएगा, इट मे कम डाउन टू 25% 30%, उसके बाद नॉर्मलाइज हो ही जाएगा. सो द क्वेश्चन दैट इन्वेस्टर्स नीड टू आस्क फॉर इन कंट्रीज where certain industries which are very dominant part of that economy, right, wahan pe if this is the kind of earning growth they have shown, do you think it will sustain? Because India ke liye the question has been, India is expensive, India earning will slow down.
But see, Hmm. India get multiple because of two reasons. Mhm. Growth longevity. As India from here till next 10 years will still be the fastest growing economy. Maybe the next 20 years. Maybe 20 years. Yeah. Yeah. So growth multiples capture that. Second, the money required to fuel that growth. Hmm. Now, world over, we are talking about AI. Look at the kind of capital which is going into it. And now people are already questioning whether this is prudent capital allocation or not. जी, हाँ. तो उस केस में आज इंडियन कंपनीज दे आर एट द डेकेडल बेस्ट डेट टू इक्विटी. उनका लेवरेज सबसे कम है. जी. वो जो ग्रो कर रहे हैं वो अपने ही कैपिटल से कर रहे हैं. सो येस, वी आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन दैट AI boom, but we have seen in last 2-3 technological change cycles that eventually we also come back. We talk to a lot of these companies, and the interesting perspective is that, see, jury is still out. Hmm. Because one of the management recently gave a very interesting argument, the Jevons paradox, for example. Hmm. आप टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट लाते हैं, सोचते हैं कि वो रिसोर्स का अब्यूज कम होगा. हाँ. वो एक्चुअली बढ़ जाता है. बढ़ जाता है. So IT AI adoption, based on that, see, initially it is going to certain countries which are participating, Okay. both in product and hardware. But eventually, with adoption of it, in last 2-3 cycles, how we have seen, we may be beneficiary of it. Okay. That is something which is another thought process. So we need to keep that in mind. Okay. That is what I would say. Okay. So coming back to my question, as an investor, हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं. I've got your perspective. Ideally, अगर मुझे let's say 10% diversification globally करना है, is that okay? I'm sure. See, Okay. आप किसी भी फंड मैनेजर से पूछेंगे, we always talk about asset allocation. जी. When we construct our portfolio, what do we look at? We look at asset allocation, only in what companies, in what sectors, Right. what weight I want. So asset allocation is something which is extremely prudent, Okay. and we should use right advisors. When we look at global diversification again, अगर मान लीजिए most investors look at US, right? क्योंकि you have a lot of आपको US में से बहुत सारी companies मिलेंगी जो शायद इंडिया में similar sectors may not be available, AI for example and so on. लेकिन आज के टाइम में जापान, कोरिया, ताइवान, इन सब देशों की तरफ भी बहुत सारा I think झुकाव हो रहा है because of semiconductors and so on, right? So do you think हमें सिर्फ US देखना चाहिए या फिर हमें ताइवान, कोरिया, जापान भी देखना चाहिए to some extent? Just a simple answer should do. I mean, Yeah. So see, the AI is, I don't think, is restricted to companies now, sure. because even governments are actively involved. For example, Japan में government is already talking about 10 trillion yen investment in next 5 years in AI. Wow. So in India also we will see policies which will help AI adoption. We will see financial again help coming to companies, and we are seeing that. So Indian companies भी देखेंगे आप, they are putting up large OSAT plants. We'll also move to semiconductors, but I don't think that this is something which is a choice. Okay. Every country going forward will have to participate. Right. So India is also taking small steps. So I think we will also see that improvement. Right now, there are certain sectors, ancillary sectors, I would say, which are catering to this. Okay. So yeah, power is one, and then maybe optical fibers is another one. Data center through, because AI eventually also brings business to data centers. So we are trying to participate, but yes, right now we are not participating in the actual AI boom. But yeah, eventually it will happen. So now let's take the conversation to a little different tangent. कोविड जब हुआ था 2020 में, तब हमने देखा था कि मार्केट रिकवरी बहुत जल्दी हुआ था. एट GFC के बाद में लगता है फिर भी मार्केट रिकवरी टुक अ वाइल, लेकिन कोविड के बाद आई थिंक विद इन 3 or 4 months, एंड दैट्स प्राइमरीली क्योंकि जो सेंट्रल बैंक्स ने बहुत सा पैसा डाला एंड दे मेड श्योर दैट मार्केट रिकवरी हैपेंड. और इसकी वजह से हमने देखा था कि बहुत सारी जो स्मॉल कैप कंपनीज हैं वो एकदम से अच्छा करना शुरू कर दी थी, इवन दो दे हैड वेरी हाई डेट, राइट? So help us understand, Ajay, that when we look at small cap का जो हमने एक बहुत बड़ा boom देखा, of course then we saw some form of correction. अभी दोबारा small caps and mid caps are doing well.
आप इस इंडस्ट्री का एक बहुत फ्लैगशिप स्मॉल कैप फंड भी मैनेज करते हैं, द मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड। तो आप हमें ये बताइए एक इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से कि अगर मुझे ऐसा एक फंड अपने लिए सेलेक्ट करना है, स्मॉल कैप फंड जिसका पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग है, हाउ डू आई सेलेक्ट दैट फॉर माई सेल्फ? आई होप इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन फॉर यू। Okay. So see, Yeah. one is as a category small cap. जी, Second is understanding what's happening in that category, and then finally picking a fund and having right allocation to that space. राइट। So I'll tell you one thing. When you said small cap recovery fast हुआ था, but I would say post COVID there is a behavioral change that has come. COVID के time पर when we met companies, the focus was on figuring out how to reduce cost, how to be more efficient. अभी वो journey जो है, it's like health. Once you have a right schedule, once you know what to eat, once you do, your yoga and walking properly, it will stay with you. You're a healthier person now. राइट। Similarly, some of those things in companies, the efficiency is still continuing. So now, as balance sheet, as businesses, they are much more fitter than before. वंडरफुल। So one is that change which has happened, and there are different matrices that we track, and based on that, we can say yes, they are behaving the way and improving on those matrices. So small cap companies, as a universe, they are efficient. Second is, see, with the volatility given small cap space, there are all. So I'm taking 1,000 crore market cap to 30,000 crore market cap. Half of the companies are still 30 to 40% down from their high. जी, So the space has got a lot of opportunities to pick from, and these are good businesses. So one, second, the opportunity is also there. Third, now picking the fund. Now fund wise, I would say, see, the fund generally philosophy, whether they are concentrating on certain aspects, certain micro pockets of economy, or they are spread out. So for investors, they need to understand that small cap will have volatility, okay, but there it is important to pick a fund where the fund is aligned towards growth, because small cap is all about growth. जी। The earning growth is generally 2x and more of large अगर cap. आप ग्रोथ नहीं मिल रहा है तो आप फिर लार्ज कैप में ही डाल Correct, देंगे, राइट? correct. So growth orientation is very important. जी, Some of these risks, how the fund is managing risk, कितने तरह के businesses हैं जो कि leverage ज़्यादा है, because see with all this the macro out is playing out. If interest rate goes up, any business which is leverage and sensitive to interest rate increase will see challenges. So fund में कितना quality of balance sheet कैसा है, I think these are some of the things जहाँ पर growth, अगर if they are invested in businesses where growth is for next 3-5 years, then I think small cap as a category will continue to give very good returns. ओके, ओके। सो नाउ जस्ट टेल मी दिस अजय जी कि अगर हम पिछले 10 साल देखें तो आप ये बताइए कि आपके क्या लर्निंग्स रहे हैं इन द लास्ट 10 इयर्स, चाहे हम कोविड की बात करें, स्मॉल कैप बूम की बात करें, वी कैन टॉक अबाउट ग्लोबल वॉलेटिलिटी इन जनरल, रशिया, यूक्रेन एंड एवरीथिंग दैट वी हैव सीन। तो आप हमें ये बताइए कि सबसे बड़ी आपकी टॉप 2 लर्निंग्स क्या रही हैं इन द लास्ट 10 इयर्स? Last 10 years, I would say the disruptions and challenges, the nature is very different. What Six Sigma events we used to say, they happen more often now. And the nature is very different. See, we can always understand अगर oil prices ऊपर गए तो which companies will benefit or which will stand to lose. एक फ्रेमवर्क रहता है इन जनरल। हाँ। बट अभी जैसे GST इम्प्लीमेंटेशन हुआ था, उसके बाद IL&FS क्राइसिस हुआ, कोविड आया, वॉर, रशिया यूक्रेन वॉर, एंड नाउ फाइनली बीच में इजराइल हमस भी हुआ था, हाँ, इंडिया पाकिस्तान भी हुआ था, अब यूएस ईरान हो रहा है। सो एज एन इन्वेस्टर यू कांट प्रीएम्प्ट एनी ऑफ दीज थिंग्स. सो नाउ व्हेन वी टॉक टू कंपनीज, दिस इज इंटरेस्टिंग, इवन वी आस्क देम दैट आपका जस्ट इन टाइम तो ठीक है, आप एफिशिएंट है, सप्लाई चेन कहाँ से ले रहे हैं, इससे माल लेंगे. अभी आप जस्ट इन केस के लिए तैयार हैं क्या कि इफ दिस हैपेंस, राइट, देन व्हाट विल यू डू? सो द रिस्क, हाउ वी असेस रिस्क, I think those things are changing. I think that conversation in how to assess risk and build in our framework is changing. जी. So that is one big change.
Second is, I think, behavioral change. Yeah, Investors need yeah. to I be agree. ready to stomach volatility. Yeah. Because see, till Jan to March, there was so much of pessimism. I know investors who did loss harvesting in March and April and May. They lost out on the returns. जी. And returns are going to be lumpy in nature. Last 20 years, we have done the exercise. Even if you invest at the peak of markets, you stay disciplined. Hmm. And this is what, all prudent investors, they have done. जी. When they understand the risk and then maybe they spread their investment, but you don't go out of market, because this is how markets surprise, whether it is going to be a V shape, K shape. You can talk about all these shapes of recovery, but Yeah. eventually market tend to surprise you both on the upside and downside. So the biggest learning is, again, be prudent. Yeah. Do your allocation right, but be more nimble and be more patient in terms of stomaching that volatility. Yeah. You know, I think मेरा जो सबसे बड़ा learning रहा है, and this is something that I learned around COVID time, कि हमेशा जब भी आप थोड़ा volatility देखते हैं, use it as an opportunity, right? क्योंकि 2008 में ना मैंने अपना career बस शुरू ही किया था, और मेरे पास उतना पैसा होता नहीं था. अगर होता तो शायद मैं मार्केट में उस टाइम में लगाती and would have made great returns. But 2020, I think I was ready. I think me and my husband, we were like, अब अगर कुछ भी हुआ ना, we have cash, we are going to deploy it, right? So I want you to tell us, Ajay ji, कि what is the, do you think हम SIPs कर रहे हैं, for example, all of us, right? लेकिन let's say कि मुझे lump sum investments भी करने होते हैं, but उसमें timing is important. What is the importance of keeping cash? And when I say cash, I'm not saying like just keeping in your bank account. Let's say कि मेरा एक debt portfolio है, जिसमें मैंने इतना पैसा रखा हुआ है कि अगर कुछ भी मुझे दिख रहा है कि मार्केट अभी गिरने वाली है, आई डिप्लॉय दैट इनटू द मार्केट एंड सीज दैट अपॉर्चुनिटी. सो डू यू थिंक ये इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी स्ट्रैटेजी है? आई मीन, ये मैं अपने पॉडकास्ट में बहुत बोल चुकी हूँ कि आई डू इट, बट आई डोंट नो इफ इट्स राइट और रॉन्ग. इट वर्क्स फॉर मी, लेकिन ज़रूरी नहीं हर किसी के लिए काम करे. आपको क्या लगता है कि क्या हमें ऐसा फॉलो करना चाहिए, या सिर्फ SIPs आर इनफ? एंड like, what is your take on lump sum investing and using market opportunity? See, our experience has also been the same. When we tell investors that this is a good time, market obviously is corrected, जी. levels are good, जी. but generally वो इतना fear factor हो जाता है कि that time I don't understand why after seeing the cycles they still hesitate. हाँ. So you are absolutely right. But I don't know how to overcome this. This human element is The extremely fear difficult. element you're talking about. ना? हाँ. Because in March, just now I told you, Jan to March, there were so many questions जी. that funds are down. What should we do? Should we Yeah. redeem? Hmm. We were telling that this is the time when you ideally should increase your lump sum. Hmm. Generally, we go with SIP for some of these market cap classes. But during that time, we were saying now time to go for lump sum, because some of these things are factored. And see, market prices, you are never sure. जी. Market conditions evolve, but if you zoom out and think of it after, say, 1 year, 2 years, what will happen? Hmm. All these things will play out on their own. I Yeah. mean, oil price increase, yes. India as a country, our dependency on any of these imports eventually will come down. Hmm. It is forcing us, expediting government and companies to take measures so that our dependency goes down on some of these imports. जी. After 1-2 years, what will happen? You will have lower current account deficit, you will have stable currency, your dependency structurally will go down. नीचे जाएगा. So as a country, Hmm. will be much more healthier. Hmm. Then you will say now India deserves even higher multiple. हाँ. Because these are the elements, these are the factors which impact valuations. So again, it's a very difficult question, but I would say that be dispassionate, look at fundamentals, look at these things. Like India, the question is, are we going to grow faster than the world? Yeah. Answer is yes. Yes. Use these as an opportunity. बिकॉज हम हमेशा लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, राइट? हम आई थिंक लास्ट 160 एपिसोड्स, अगर एक चीज़ जो हर एपिसोड में निकल के आई है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करिए. सो विच लॉजिकली मीन्स कि अगर हमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो करंट वॉलिटिलिटी शुड नॉट इम्पैक्ट यू एज अ पर्सन और एज एन इन्वेस्टर, राइट? तो फियर तो होना ही नहीं चाहिए अगर आप 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं.
आई थिंक अगर मेरे व्यूअर्स उतना ही समझ जाएं, आई थिंक अ पर्पस हियर इज सॉल्व्ड. But I've seen that maturity coming somewhat Yeah, I in agree. Indian Yes, market. yes. SIPs clearly reflects that. True. And so that way I think the good work done by platforms like yours Yeah. is helping investors Yeah. clearly. Sure. Let me ask you this question. Somehow, we have a lot of questions around small cap. I'll come back to small cap because हम already थोड़ा discuss कर चुके हैं. I want to talk about your mid cap fund, right? And I think आपसे बहुत सारे लोग आज के टाइम में ये सवाल पूछ रहे होंगे कि जो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है वो हैज़ बिन एन आउट परफॉर्मर राइट फॉर फ्यू इयर्स एंड अगर हम पिछले 1 साल की बात करें तो ऑफ कोर्स वी हैव सीन इट नॉट डू सो वेल. तो आप हमें एक तो इसका रीज़न बताइए, राइट? टेल अस कि ऐसा क्यों हो रहा है. एंड एज एन इन्वेस्टर अगर मैं इस फंड को होल्ड कर, लेट्स से कि मेरे पास ये फंड पिछले 5 साल से है वर्सेस एन इन्वेस्टर जिसके पास ये फंड पिछले 1 साल से है, what would you tell these two different categories of investors? So mid-cap fund actually is a prime example of perfect storm. जी. Because what happened, we were invested in sectors like IT and still, see, point is, जो IT companies में we were invested, वो आज भी highest earning deliver कर रहे हैं, 3x of industry growth. But because of challenges across the world about the sustainability of services business, उनका multiple de-rating हो गया, जबकि earning cut नहीं हुआ है. So I think one is that higher allocation to that sector, and as I told you, the jury is still out whether IT will actually see increase in services pie from here. Still, the jury is still out. So we'll see. But as a prudent measure, we have reduced our allocation In IT? in IT. Yeah. Okay. One is that. Second is we again, as I said, perfect storm. So हम जो sectors में invested नहीं थे. For example, commodities, cyclicals, oil and gas, PSU banks and all. Last year, सिर्फ वही sectors ने अच्छा किया है. Metals, for example, they were the top performers. Yeah. So one hand, where we were overweight did not do well. At the same time, cycle played out for some of these super cycle, I would say, played out for some of these commodity sectors. But this is not the first time we are seeing it. And see, this is the good part. You may ask me how during COVID, how companies will behave. Business has to open. Then only I can tell you how they will. At least with commodities, we have seen enough cycles. So there, I think we are fairly confident that we have made certain changes in portfolio. Okay. We have increased the number of stocks. We have added 2 sectors where we believe that domestically they will do well. And even if, जैसे अगर ये global geopolitical issues play out होते हैं, but these sectors actually will benefit, and which is already reflected in a lot of our schemes, where they were pre-positioned into some of these sectors, and they are seeing the benefit of it. So in mid-cap, we have made those changes. My only thing is that because these businesses have seen price erosion, now so when you we think are recovery में time लगेगा? Now, see, it's like if companies do well and there is price distraction that price have come down, I think theoretically that is the best time, right? So our portfolios that way in mid-cap, especially with all the changes done, it is placed that way where earning growth is coming and the multiples of the portfolio has come down drastically. So that should give some peace of mind to the investors. See, investing is individual decision, so I can't comment on it. But I can tell you fundamentally, these businesses are delivering strong growth and they have seen price correction. So that gives you an answer that how scheme ideally should do well, but give us some time. We have made the changes and we believe over a period of time it will reflect how it is happening in all of our other schemes. Okay. Yeah. So just my small take on this. आपका जो mid cap fund का portfolio is very concentrated. The investment objective says maximum 30 stocks. Tell me why? क्योंकि जो mid cap universe है वो तो 150 stocks का है, right? तो अगर हम जो बाकी funds देख रहे हैं mid cap funds in the market उसमें 50-60 stocks 70 तक भी जाते हैं. तो अब ये बताइए कि do you think ये भी एक reason हो सकता है कि portfolio बहुत ज़्यादा concentrated है जिसकी वजह से शायद underperformance आ रहा है? So I'll answer it in 2 ways. One is when you say concentration.
we run between 2% to 6 to 7% allocation. Okay. See, because we talk about our framework QGLP and conviction, we don't buy 0.2, 0.3, 0.4%. Yeah. So clear it is, we have done enough work. If we like a company or an industry, at least हम चाहते हैं 2% allocation तो minimum हो. Okay. Second question is the sectoral concentration. Now, if I like something, say a bank or banking as a space, I will have at least 2-3 names, but I will Right. not have 8-10 names because Okay. आप उसको बोलेंगे वो diversification है. But when if there are challenges in financial market, everything will come down. Okay. Okay. So for us, it is important to pick the stocks in that sector which will grow faster, which will gain market share. And over a period of time, this philosophy of ours has delivered good returns. Yeah. So it's both things. One is we like to buy, say, minimum allocation. At the same time, we are not concentrated because so this is the perception that it is concentrated, but it is actually well diversified. Okay. We have representation to all the sectors which we like. Okay. At the same time, we are not benchmark hugging. Okay. So we have high active weight. अभी बिकॉज वो इंडेक्स में कुछ वेट है इसलिए हम लोग नहीं खरीदते. अगर वो अर्निंग ग्रोथ नहीं है, अगर वो हमारे QGLP फ्रेमवर्क में फिट नहीं होता है, देन वी डोंट बाय. Okay. So that is the difference. And see, I would still say over period you can see our performance. So Yeah. that Okay. tells you. Okay. So if I look at the mid cap fund and I compare to the large and mid cap fund, जो भी आप हैंडल कर रहे हैं, right? So large and mid cap fund surprisingly बहुत अच्छा कर रहा है, and mid cap fund hasn't done so well. और large and mid cap fund maybe there's a reasonable mid cap allocation, right? तो फिर what is the difference between the two? So I think the portfolio construction, for example, large and mid cap, you have all say 70 to 75% large and mid. As a category, you can build more risk into it. So we have allocation to small caps also, but companies above 10,000 crore market cap, they are not see small. So again, small caps be small cap, but नहीं they're not रहे हैं. necessarily very small. Yeah. So we have those companies where we see high growth. Okay. And fortunately for large and mid cap, our allocation to some of those sectors and companies, because it was a portfolio which was managed by a single manager for last 2.5-3 years. So I think there's allocation was there. In mid cap as a category, you need to have 65%. And right now we do not have small cap allocation in mid cap. So we are making those changes. So because some of these changes are still work in progress, you will start seeing the difference. Okay. So both in terms of complexion of portfolio weight and market cap, you will see these difference now. Okay. Okay. So now I'm just going to switch back a little bit to the small cap space. Just the last part of our conversation जो हम funds के बारे में करेंगे. Then I have some general questions for our investor. What lessons should investors learn from the previous small cap cycles? ऐसे कौन से lessons जो investors को सीखने चाहिए? क्योंकि I truly believe कि जब आप small cap में invest कर रहे हैं, आपका mindset थोड़ा अलग होना चाहिए compared to any conservative investor. तो आप ऐसे क्या जो भी small cap cycles हुई हैं, उससे हमें क्या सीखना चाहिए? See, I'll break it into two parts. One is small cap investing through mutual fund and small cap investing directly. Now, why I would say mutual funds are better equipped is because small caps में cycles काफी short हो रहे हैं. Okay. What I mean by that is that earning growth for some of these companies, because see, they have dependency on few clients, products and geography. So when they do well, the earning deviation is say 20-30%, which we don't see in large and mid. So especially the returns also are exaggerated that way. Yeah. Multiple expansion भी काफी होता है. And then you have liquidity consideration also. So small caps में, because these sectoral shifts are happening pretty fast, as a category, it gives you enough options, even though you will say index it is at 27-28 times. But you will find again categories in small cap which are 15 times, and you have categories which are at 50 times. Right. And even the 50 PE stocks are growing at 50 to 100%. So the PE actually is still expanding from there. Right.
So there's divergence which has increased drastically in last 5-7 years in Hmm. small cap earning, I would say, trajectory. So I think that is one thing which small cap investors need to keep in mind, that the earning growth delivery trajectory is very different from earlier what it used to be. And a lot of these new spaces are And coming can in we say small कि cap. volatility भी ज़्यादा ही होता है, तो as an investor आपको mentally prepared रहना चाहिए? Always the case. I would say what gives me the confidence, especially for the small cap category, पहले ना वो businesses का balance sheet leverage होता था. Hmm. जब भी problem आता था, banks, NBFC, suppliers, distributors ना हमेशा small cap businesses struggle करते थे to Yeah. get finances, Hmm. which now is not the case because now the balance sheets are strong. तो उसीलिए generally I believe the volatility in small cap has come down. Even if last 2-3 cycles you look at, Hmm. the small cap volatility is practically in line with large and mid. Hmm. So that way, I think because of health of balance sheet, the volatility has come down. Okay. Earning trajectory is still strong. Mhm. So that should give little bit of confidence to investor that as a category, as a whole, it has improved. So now, let me ask you some questions about your personal mutual fund portfolio. आई थिंक हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि अजय जी जो इतने बड़े बड़े फंड्स हैंडल करते हैं हमारी इंडस्ट्री के, वो खुद कैसे अपना पैसा निवेश करते हैं. तो आप हमें पहले ना थोड़ा अपना इन्वेस्टिंग जर्नी के बारे में बताइए अजय जी. आपने कब शुरू किया, कैसे शुरू किया, हाउ हैव यू इवॉल्व्ड एज एन इन्वेस्टर ओवर द इयर्स? I started in 2008, Okay. and I think I would say market crash course हुआ था, market भी crash हुआ था, and the learning was also in उसमें आपका क्रैश कोर्स हो गया Yes. उस एक साल में. Yeah. From 2008 January till March 2009, I think whatever you had to learn, Yeah. you would have learned. Hmm. So seen that cycle and then the 2013 cycle. I think these are the things which books cannot teach you. हाँ. I have seen my आई डोंट थिंक friends. कोई एमबीए भी आपको ये सिखा सकता है. I've seen my friends who started in say 2011. Their, their notion of risk is very different from people who started in 2008. जी. For us, we always talk about risk. हाँ. It is extremely important. Somebody who started during, a market upcycle. Hmm. So they have a very different perspective about markets. उनका आई थिंक इन्वेस्टमेंट को लेके पर्सपेक्टिव बहुत अलग होता है, Yeah. क्योंकि उन्होंने एकदम से इन्वेस्ट किया, दे सॉ ग्रेट रिटर्न्स एंड दे लाइक वाह क्या है. So True. the learning is because now seen at least 4-5 cycles, I think I'm more dispassionate. Hmm. And as a fund manager, that also again helps because Hmm. we are very objective. Hmm. If people keep asking this question, आप कब stock खरीदते हैं बेचते हैं? हाँ. For us, it's very simple. If business is performing, if they're exceeding my expectation, I want to buy more. Hmm. But if there's a structural problem, something where I do not have a handle on how the earnings are going to be for next 2-3 years, हाँ. I have to sell irrespective of price राइट. because capital preservation is equally important. True. So the learning is, I think you will not see us get swayed by these market cycles anymore. Some bit it happens, but it is much more lesser over a period of time because we have seen it. Yeah. The nature of now challenges are very new. Hmm. I mean, what president will announce tomorrow? Hmm. How will you react to it? Hmm. So there, I think the idea earlier of knee-jerk reactions, that has come down drastically. Okay. So yeah, that I think that Okay. helps. So क्या आप हमें अपना पर्सनल पोर्टफोलियो के बारे में थोड़ा बता सकते हैं? Which categories are you invested in? Which funds maybe? So see, because I have seen all these cycles, and I look at asset class which can give higher earning. Right. Okay. So my biases clearly are towards Equity. equity. Hmm. One is that most efficient, liquid, tax-wise also. So that is there. Second is because see, our considerations are different. Our investment horizon is very different. Our money requirement is very different from other investors. So that makes a lot of difference. Somebody who needs money in 1 to 3 years ideally should have a very different portfolio allocation. Hmm. For us, it is very different. So that again, time horizon is different. Right. So based on that, I think 80% of my money is in equity portfolio. Okay. And there also,
आपने because equity में कैसे diversify किया हुआ है? see वहाँ पर because we do not we barely invest in stocks, so most of it is in equity mutual funds only. Mhm. And generally we understand little bit of cycles. So see there, if a sector is going through a downturn, we know that I do not have to look at for 3-5 years. I do not have to time it the earning for next 3-5. So sometimes I buy sectoral funds also, Okay. but by and large it is more towards mid and small Okay. is where I am placed, because Okay. again, see, large cap, I like the category. As investors, you should have allocation too. But Ji. given our, I mean, you asked about me. Exactly. So my investment horizon and क्योंकि understanding I'm is sure very आपका different. risk appetite also slightly higher. So आप Yeah. you're okay कि मैं ज़्यादा mid और small cap में जा रहा है. Yes. Okay. Okay. And जो बाकी 20% है वो आप किस में डालते हैं? Is it only debt या debt gold? How do you diversify that or how do you manage that? My wife forces me to buy gold. Okay. Okay. So that is there, but otherwise, primarily debt and liquid. Okay. 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 Have you suffered any losses in your mutual fund portfolio? मतलब अगर आप अपना journey देखें 2008 से 2025 तक, that's about 17 years. तो loss कब देखा आपने portfolio में and how did you react to it? Like what was your reaction कि मुझे क्या करना चाहिए? कुछ किया नहीं किया? 5-year rolling return for any time frame you look at from 2008 to 2026, हाँ. it has hardly gone into negative trajectory. Hmm. So, I mean, portfolio negative तो कभी हुआ ही नहीं Hmm. that way. I mean, if Okay. you started at even 2008, for that brief period, of course, it was down, but then it came back strongly. So, investors, I think, who have seen maybe more than 3 years now, I don't see their portfolios will be negative. Right. So, I think it's been a fairly decent journey, I would say, because generally market minus 20%, 30%, there are a few times which happens. But if you've been investing for a long period of time, data suggests index has not gone into negative for 5-year rolling return. जी. So that way, I think that way it is fairly simple. I think it is Okay. so obvious that this category Okay. it will not give you, if you hold it for long, it will not give you negative return, mostly liquid, tax efficient. I don't know. Okay. 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 So tell me something. Let me ask you this question a little differently. आपका जो भी इन्वेस्टमेंट रहा है इतने सालों में, do you think आपने अगर कुछ अलग किया होता तो शायद आपका कॉर्पस और ज़्यादा बड़ा होता? So some mistakes that you think you've made, जिससे शायद you would have been at a higher corpus now. I think everyone has same regrets. We should have invested earlier, and we should have been more confident, because at the end of the day, what matters is I have invested 1 lakh rupees, 1 crore rupees or 10 crore rupees. Because even stock doubles, I have seen this retail mein, they get so excited. Mutual fund mein 30% return aa gaya, stock double ho gaya. But the question is, how much did you invest in it? So see, the regret is whoever wants financial freedom, they have to first reach to that size, because every second, third year market will give you that return. So the regret is again, I should have been far more aggressive during my earlier times. What you said in 2020, what you did, we as managers and before that research analysts, we saw more of those cycles. Correct. But yeah, we should have been more prudent and more, invested. Okay. Okay. So Ajay, just my last question, and ये मैं चाहूँगी कि जितने भी हमारे investors हैं आप उनको ये समझाइए. There are of course quite a few people जो शायद ये believe करते हैं कि सिर्फ म्यूचुअल फंड से हम अमीर नहीं बन सकते, and they probably the people जो शायद और ज़्यादा रिस्क भी ले सकते हैं, डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं and so on. So I want you to tell us ऐसी कौन सी strategies, ऐसी कौन सी techniques हो सकती हैं to dispel certain myths about mutual funds. है म्यूचुअल फंड्स को लेके बहुत सारे myth हैं, और मैं चाहूँगी कि आप वो ऐसी कुछ टेक्निक या स्ट्रैटेजीज बताइए जिससे म्यूचुअल फंड से लोग अमीर बन पाएँ, जो बहुत कॉमन नहीं है. मतलब कॉमन स्ट्रैटेजीज तो हम सबको पता ही है, समथिंग डिफरेंट दैट यू टेल अस जिससे हम म्यूचुअल फंड्स में अमीर बन सकते हैं. See, I think रामदेव जी बार बार बात करते हैं the power of compounding. And I have seen distributors explaining it to potential investors in a very simple way. You invest with 5,000 rupees, 10,000, 2,000, and then
expect nominal return of 12-13%. It is the time period that matters more, because after 15-20 years, the way it multiplies. Okay. And they are very simple way to, visually also communicate to the investors. The magic is start early. The magic is give it time, because that last 5 years from 15 to 20 makes, I think, the magic of compounding really Right. plays out there. So, I'll give you one example. In our company, another fund manager, one sales guy asked him, how you have become so fit? He said, right diet and right exercise. Sales guy was like, no, please, you're kidding. Give me some magic formula. There is no magic formula. Do the right things. And then you will be there. Okay. So investing is as simple as that. You give it time and you will see the magic after once you cross that time period. Okay. And see, compare. I give you example of gold. How gold as an asset class, still equity has outperformed. Remove just last 2-3 years. See the liquidity and tax aspect of it. And then my only thing is build that corpus as soon as possible, because return on that corpus will make the difference. Yeah. So I think that's what. So there's no magic formula to becoming rich. It's just simple. Okay. Fair. Okay. So now as the last part of our conversation, I have some rapid fire questions for you. इसमें या तो आप एक word का जवाब दे सकते हैं, एक sentence. अगर if you want to explain, please feel free to do it. Okay. So let's start. One investing rule that worked brilliantly well during the 2020 crash. Sticking to quality companies. सबसे बड़ी mistake जो retail investors ने की during COVID. Too much of trading. Too much of trading? You think so? Okay. I think the way people onboarded that and उसके बाद participation level बढ़ा. But फिर I think they caught on to it, and then after that I think they somewhere lost that, because उसके बाद market return आया. But that discipline, I think somewhere I believe वो discipline somehow they missed on that. Okay. So I think that discipline is something. SIPs during a crash continue करना चाहिए, pause करना चाहिए? I think after our conversation, and as you said, we have been talking about in 150 episodes, SIP is something which is... कभी नहीं रोकना चाहिए. There is... Somebody has to tell me really benefit of doing it, and we would like to have conversation with numbers. Okay. ये सवाल मैंने आपको main conversation में नहीं पूछा था. One sector which has bounced back really well. ऐसा कौन सा एक sector है जो आपको लगता है जिसने बहुत अच्छा किया है? एकदम से bounce back किया है? So because of these geopolitical issues, I think defense is finding favor again and again. Okay. The focus on renewables will continue to increase. Fintechs, they are doing fabulously well, and they'll continue well because the overall addressable opportunity is still very large. Okay. If, God forbid, COVID-like scenario was to come back, ऐसी आप क्या चीज़ है जो अलग करेंगे? This is a difficult one. आप क्या अलग करेंगे? मैं क्या अलग करूँगी? और पैसा invest करूँगी. Yeah. So I think that is one obvious answer for all the investors. If you get that kind of opportunity, yes, clearly my answer is the same. Okay. Biggest lesson from the recent small cap rally? Recent small cap rally. Yeah. See, the recent small cap rally is all fundamentally driven. Numbers for this quarter started coming, and we see the price reflecting the fundamentals. Okay. And वो वापस investors को confidence देना चाहिए कि eventually अगर business performance deliver हो रहा है, then cut down on the noise. Your stock prices reflect that. Okay. So clearly it is testament of operational performance improvement. Okay. Okay. Chasing past returns, do you think ये सबसे बड़ा behavioral trap है? Yes and no. Because see, when we evaluate companies, we look at how they perform. We look at what is their next leg of growth strategy. So I would say it is combination of both. Okay. Because we need to see how they have behaved in the past, what kind of capital allocation decisions they have taken. Right. That tells you. Similarly, केवल उसी पे rely करना and आगे का growth strategy कोई clarity नहीं है, then again you will fall.
So I would say it is combination of both. ओके एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप एलोकेशन कितना होना चाहिए परसेंटेज वाइज? See, somebody who has more than 5 year of investment horizon and who understand the risk. Understanding the risk and volatility part is very important. अच्छा, I mean, I have very high allocation, but I would say 30% is a good number. ओके गोल्ड, डेट और इक्विटी एक्चुअल में हमारे पोर्टफोलियो को कौन सा एसेट क्लास प्रोटेक्ट करता है? Over period equity, ओके near term gold, अच्छा, medium term debt, because debt, see, you understand interest rate cycles. राइट So there you know, if inflation is increasing, interest rate is going to increase, reduce your allocation, and when there's an ample liquidity, come back to it. ओके ज्यादा डेंजरस क्या है अजय, इन्फ्लेशन या फियर? Inflation plays in cycles. ओके So we know. आई थिंक फियर आल्सो प्लेज इन साइकिल्स. Fear, I think fear ka inflation, there is still you can estimate. Fear, I can't estimate. Inflation, I will be more prudent. Given the inflation, I'll be more prudent. मैं क्या अपना discretionary spend कम ज़्यादा करता हूँ. Fear में people become, you know, Right. more, they make wrong decisions because of fear. ओके इन्वेस्टिंग में क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट है, एक्सपीरियंस या इंटेलिजेंस? Experience now, because intelligence and knowledge arbitrage has come down drastically. ओके Because information is available practically to everyone. Now even retail investors are equally have access to information, and regulators are also making sure that information asymmetry goes down. ओके So, So I experience. think experience tells you more, Okay. and then yeah, intelligence and luck both you have to have. ओके वन क्रैश यू विल नेवर फॉरगेट? 2016-17, I think that the ILFS crash. इज इट? ओके Because it came as an element of surprise, and the extent was, टू I मच. think, yeah, it hurt Hmm. when you did not see it coming. COVID and all, you can't prepare, right? Some of these events you can't prepare. You can only react, and then that also helps Okay. you. ओके तो अगर हमें मार्केट्स का जो लास्ट डेकेड है उसको एक वर्ड में डिस्क्राइब करना पड़ेगा तो गिव मी दैट वन वर्ड. Resilience. Okay, good enough. All right. Last question, which I'm sure my investors would want to know. One book that every investor should read. I think my favorite is One Up on Wall Street. Okay. As we discussed before, it is not something which is financial jargon. Whether you are interested in investing or not, I think it's a very good book, very simple read. Okay. Yeah. Sure. Wonderful. Thank you so much, Ajay ji. I think it was a great conversation. You know, हमने बहुत कुछ डिस्कस कर लिया इस कॉन्वर्जेशन में, स्मॉल कैप्स, मिड कैप्स, ग्लोबल फंड्स, ग्लोबल इकोनॉमी. We've discussed a lot of other things. So I think it was a very useful conversation from many contexts. So thank you so much again for your time. Always And, a pleasure. I do hope we can get you back again, maybe with a different topic. And hopefully, once your fund starts performing, and it already has, the mid cap fund, maybe we'll get you and ask you, अब क्यों अच्छा करा, हमें ये बताइए. But Sure. thank you so much, Ajay. Thanks a Thank lot. you. Thank you. Thanks. Wow, that was such a wonderful conversation with Mr. Ajay. I'm sure आप सबको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा. तो जल्दी से जो भी हमने पॉइंट्स डिस्कस किए मैं आपके लिए समराइज कर देती हूँ. तो सबसे पहले हमने मिस्टर अजय से पूछा कि क्या हमें इंटरनेशनल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, कंसिडरिंग कि आज के टाइम में देयर इज सो मच डिपेंडेंसी ऑन ग्लोबल सप्लाई चेन्स. सो शुड वी डाइवर्सिफाई आवर पोर्टफोलियो इन इंटरनेशनल मार्केट्स? तो मिस्टर अजय सेज कि इंटरनेशनल मार्केट्स में ऑफ कोर्स थोड़ा पैसा डाइवर्सिफाई करना चाहिए, क्योंकि अगर हम देखें तो जो आधे रिटर्न्स हैं फ्रॉम इमर्जिंग मार्केट्स अलोन, वो मार्केट्स लाइक साउथ कोरिया या ताइवान से आए हैं. अब ये जो मार्केट्स हैं ये काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती हैं इन एआई एंड सेमीकंडक्टर्स एंड सो ऑन. और अगर आपको इन इंडस्ट्रीज़ में पार्टिसिपेट करना है तो फिर आपको ऐसे इमर्जिंग मार्केट्स में शायद थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि अभी के समय में इंडिया जो है वो इस एआई बूम में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है. फिर हमने मिस्टर अजय से पूछा कि स्मॉल कैप फंड्स हमें कैसे पिक करने चाहिए. सो मिस्टर अजय सेज कि अगर हम स्मॉल कैप फंड्स को देख रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि जो स्मॉल कैप फंड है वो इस फंड को कैसे मैनेज कर रहा है, वो हाउ आर दे पिकिंग स्टॉक्स. देखिए, स्मॉल कैप इज ऑल अबाउट ग्रोथ, राइट? तो ही सेज कि सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि जो स्मॉल कैप का पोर्टफोलियो है वो कैसा है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ. ही ऑल्सो सेज कि कोविड के बाद जो है बहुत सारी जो स्मॉल कैप कंपनीज हैं उनका बैलेंस शीट काफ़ी स्ट्रांग हो गया है, जो एक अच्छी पोटेंशियल देता है फॉर गुड रिटर्न्स इन द लॉन्ग टर्म. किसी भी फंड के लिए आपको क्या चाहिए? यू नीड ग्रोथ, यू नीड रिस्क. तो एक और चीज़ जो आपको देखनी चाहिए वो ये है
कि आपका जो स्मॉल कैप फंड है वो रिस्क को कैसे मैनेज कर रहा है। तो ही सेज कि इन जनरल स्मॉल कैप फंड्स आगे जाके अच्छा करेंगे। फिर हमने मिस्टर अजय से पूछा कि क्या हमें थोड़ा कैश रेडी रखना चाहिए टू मेक यूज़ ऑफ मार्केट अपॉर्चुनिटी, कि अगर मार्केट क्रैश हुआ तो हम मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ही सेज कि जब भी मार्केट्स में करेक्शन होता है वो एक इन्वेस्टर के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मानी जाती है। सो इट इज़ अ गुड आइडिया कि आप थोड़ा कैश रेडी रखिए टू डिप्लॉय इन द मार्केट। लेकिन जो आई थिंक सबसे बड़ी चीज़ है विच ही सेज इज़ फियर, राइट? क्योंकि जब भी मार्केट करेक्शन होता है हम बहुत डर जाते हैं और उसकी वजह से हम उस मार्केट अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। सो ही सेज कि वो फियर को अगर आप साइड में रख पाएँ तो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट मोर मनी। तो आप जो लमसम इन्वेस्टमेंट है वो करेक्शन के समय में डिप्लॉय कर सकते हैं। व्हाट ही ऑल्सो सेज इज़ कि शायद आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ फ्यूचर में उतनी ना मिले, क्योंकि इंडिया इज़ अ ग्रोइंग इकोनॉमी एंड यूल ओनली सी अ लॉट ऑफ ग्रोथ फेसेस इन टाइम्स टू कम। फिर हमने मिस्टर अजय से ये भी पूछा कि क्या हमें स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड मिस्टर अजय सेज कि जो स्मॉल कैप फंड्स होते हैं वो आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देते हैं टू गेट बेटर रिटर्न्स। ही सेज कि जो स्मॉल कैप फंड्स होते हैं उनमें अभी के टाइम में साइकिल्स शॉर्ट हैं, उनमें जो रिटर्न्स हैं वो एग्जैजरेटेड हैं। लेकिन अगर आप स्मॉल कैप कंपनीज की बात करें तो उसमें ये आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं, बिकॉज आज के टाइम में बैलेंस शीट्स अच्छी हैं, आज के टाइम में लेवरेज कम है स्मॉल कैप कंपनीज का, इनका जो अर्निंग्स है वो भी काफ़ी अच्छा हुआ है। सो इन जनरल अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनका टाइम होराइजन 5 साल से ज़्यादा का है, अगर आपका रिस्क टॉलरेंस भी हाई है, तो आप 30% तक का जो आपका पोर्टफोलियो है वो स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर हमने मिस्टर अजय से उनकी पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स के बारे में डिस्कस किया कि वो अपना पैसा कहाँ निवेश करते हैं। ही सेज कि लार्जली वो अपना पैसा म्यूचुअल फंड्स में ही डालते हैं। ही सेज कि उन्होंने जब इन्वेस्ट करना शुरू किया था, दैट वाज इन द ईयर 2008, जब मार्केट क्रैश हुआ था, तो उनका जो पर्सपेक्टिव है टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट वो काफ़ी अलग है कंपेयर टू दोज इन्वेस्टर्स जिन्होंने शायद अप साइकिल में अपना इन्वेस्टमेंट शुरू किया हो। तो मिस्टर अजय सेज कि उनका जो है काफ़ी फोकस कैपिटल प्रोटेक्शन के ऊपर ही रहता है। सो ही सेज कि उनके पोर्टफोलियो में 80% इक्विटी है और वो जो रिमेनिंग 20% है वो डेट लिक्विड फंड्स में डालते हैं। लेकिन जो 80% इक्विटी है उसमें भी उनका काफ़ी बड़ा हिस्सा मिड कैप या स्मॉल कैप फंड्स में जाता है। ही ऑल्सो इन्वेस्ट स्मॉल पोर्शन इन थीमेटिक फंड्स एंड सेक्टरल फंड्स, क्योंकि ही अंडरस्टैंड्स हाउ डिफरेंट सेक्टर्स वर्क। फिर हमने मिस्टर अजय से पूछा कि इज एनी रिग्रेट्स दैट ही हैज़, कि शायद ऐसा कोई भी चीज़ जो शायद वो बेटर कर पाते फॉर मोर वेल्थ क्रिएशन। तो मिस्टर अजय सेज कि वन थिंग ही रिग्रेट्स इज़ कि उन्होंने शायद वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नहीं थे अपने इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स में व्हेन ही वाज यंगर। तो ही सेज कि मैं शायद अगर ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर पाता तो दैट वुड हैव बीन बेटर। ही आल्सो सेज कि अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है तो आपको अपना इन्वेस्टमेंट्स जल्दी शुरू करना चाहिए, क्योंकि टाइम ऑलवेज प्लेज अ बिग रोल इन इन्वेस्टिंग। अंत में हमने मिस्टर अजय से पूछा कि अगर हमें म्यूचुअल फंड्स के ज़रिए अमीर बनना है तो हमें क्या करना चाहिए। वो सेड वन थिंग जो शायद हमें म्यूचुअल फंड्स के थ्रू अमीर बना पाएगा, रिच बना पाएगा। तो मिस्टर अजय सेज कि जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो समय। एवरीवन सेज दिस बट ही सेज कि जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है वो आपको सिर्फ टाइम से ही मिल सकता है, नथिंग एल्स। इट इज़ नॉट अबाउट द मनी दैट यू इन्वेस्ट, इट इज़ अबाउट द टाइम यू गिव टू योर इन्वेस्टमेंट। सो ही सेज कि अगर आपको ट्रू वेल्थ क्रिएशन चाहिए तो आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का की वजह से ही आप वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे, और वो कंपाउंडिंग आपको समय की वजह से ही मिलेगा। तो आप जितना जल्दी अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे उतना आपके लिए बेटर होगा for you to create true wealth for yourself. So that was about in this particular episode. I do hope आप सबको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला हो। हमने rapid fire questions भी पूछे, some really interesting questions. Please check out the video. And thank you so much for watching, guys. I do hope you guys will come back and watch the next video as well. Please like this video, share it with everyone, and please do subscribe to the Grow Mutual Fund channel, which is called Mutual Funds with Grow. Thank you so much for watching. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.